Hey guys, how's it going? My name is Aakash Singh. Now in this video, we'll be covering a bit about Python lists. But before we start, a quick introduction. I have been teaching computer science for a couple of years now. Before we begin the video, I would just like you to suggest one thing. अगर आपको कभी भी कोई doubt आ रहा है CS, IT या AI वाले subjects में, you can join the Telegram group. I have given the link in the description of this video. जहाँ पर आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो and I'll be able to help you there. So let's begin with the session by talking about कि हम लोग आज क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं. List manipulation is important in Python language because इससे आपको बहुत ज़्यादा options मिल जाते हैं कि आप अपने प्रोग्राम के साथ क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. So in this video we'll be looking at basics of list manipulation और lists. कैसे हम lists को join कर सकते हैं, repeat, slicing. How are lists worked with, like appending कैसे होती है, updating कैसे होती है elements को, हम delete कैसे कर सकते हैं elements, and at the end we'll also look at a couple of functions. So all these topics will be covered with this few examples as well, इससे आपको समझने में थोड़ा easy हो जाए. In a later session हम लोग थोड़े practicals भी देखेंगे so that you can understand all of the topics being covered today in a better manner. But for now let's just start with the theory. So we saw in data handling part what a list is. It is a collection of items. एक sequence होता है जिससे आप चीज़ों को collect करके रख सकते हो एक साथ. यहाँ पर हमारे पास जो list है, it is of about 5 days of weekend. Now this data type is string. If you see, each list has an index associated. Basically हर एक list element का एक roll number होता है which starts with 0 and ends at length -1. Now इस लिस्ट की जो लेंथ है that is 5. That is the reason हमारे जो रोल नंबर्स है और मे बी इंडेक्स जो आप उसको बोल सकते हो starts from 0 and ends at 4. So this is the forward direction of indexing. अगर आपको पीछे से काउंटिंग करनी है तो हम लोग -1 से स्टार्ट करते हैं and it will go on till the first element. Looking at how you can create lists, ऑलवेज रिमेंबर जब आप लिस्ट बनाते हो यू नीड टू यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स. यहाँ पर हम लोगों ने 3 लिस्ट्स क्रिएट किए हैं. फर्स्ट लिस्ट इज ऑफ 4 एलिमेंट्स. सेकेंड लिस्ट इज ऑफ 5 एलिमेंट्स एंड द थर्ड लिस्ट इज ऑल्सो ऑफ 4 एलिमेंट्स. इफ यू नोटिस वन थिंग, जरूरी नहीं है कि लिस्ट के अंदर सारे डेटा का टाइप सेम हो. इट कैन बी डिफरेंट, इट कैन बी अ मिक्स्ड डेटा टाइप. जैसे यहाँ पर हम लोग str देख रहे हैं बट these two data types are integers. यहाँ पर सब integers हैं and over here everything is a string or character data type. You can also create a blank list by just saying मैंने यहाँ पर 2 square brackets रख दिए but element मैंने एक भी नहीं डाला, which means the list is empty. So after you create a list you need to be able to access the items inside. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने क्लास की रोल नंबर लिस्ट बनाई है उसके अंदर मैं रोल नंबर्स को एक्सेस कर सकता हूँ. दैट इज द वे आई कैन यूज द डेटा. सिमिलरली इन ऑर्डर टू एक्सेस आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट हम लोग इंडेक्सिंग यूज करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट राइट द इंडेक्स ऑफ ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स. द लेंथ ऑफ दिस लिस्ट इज 3. यहाँ पर जो इंडेक्स है इट विल ऑलवेज बिगिन विद 0, 1 and 2. सो लेट्स सी व्हाट आर द आउटपुट्स वी कैन गेट. इफ आई ट्राई टू प्रिंट, okay, so let's just rename this as list. ठीक है, so list का 0th element index at 0 is 3. First element is 5. Second element is 9. By using square brackets आप किसी भी element को access कर सकते हो within a list. उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आपको forward indexing यूज़ करनी है. You can also count from back. तो जब आप पीछे से count करोगे all the indexes will be negative. जैसे अगर मैंने यहाँ पर इंडेक्स लिखना चालू किया, it will start from -1. So this becomes 9, this becomes 5, and this becomes 3. I hope things are clear till now. Next up is how can you extract elements one by one, or maybe how can you move from one element to another inside a list. So इसके लिए हम लोग range function use करते हैं because we have to create a sequence. If you want to learn more about the for loop and while loop, there is another video जहाँ पर मैंने ये सब चीज़ें cover की हैं. For now, I am assuming that you know what a for loop is. When this function prints,
the output we get will look like this: 3, 5 and 9. So if you did not understand this, let's try to understand in this way. मैंने I वेरिएबल को ये सब वैल्यूज अलॉट किए हैं, which means all these values inside this range function will be taken. But when I'm printing, मैं क्या करूंगा यहाँ पर? मैं यहाँ पर लिस्ट का इंडेक्स इन नंबर से चूज करूंगा, which means it will eventually look like this: list at 0, list at 1, list at 2. जब आप इन सब एलिमेंट्स को प्रिंट करोगे, you will get this. So this is how you can extract the elements from inside a list. Apart from that, आप जब दो लिस्ट यूज करोगे, you can also join them up. जैसे मेरे पास यहाँ पर दो लिस्ट हैं, list and list 2. If you want to join a list and make it like 1, 3 and 4, in order to do this, there is a simple operation which is available to you. यहाँ पर आपको सिर्फ बीच में एक प्लस साइन ज्वाइन करना है एंड आप दो लिस्ट को ऐड कर सकते हो. It is not summation, it is just joining of two lists. So the output we get over here is 1, 2, 3 and 4. It is not necessary कि यहाँ पर आपको सारे elements integers होने चाहिए. If I have a list which looks like this, अगर मैंने ये ऑपरेशन फिर से एग्जीक्यूट किया, the new output I will get should look like this. So it does not matter कि आपकी लेंथ कितनी बड़ी है लिस्ट की या फिर आपकी लिस्ट एम्प्टी है, this operation will always hold true. उसके बाद आप रेपिटेशन भी कर सकते हो लिस्ट में. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव एन एलिमेंट x और मुझे एक लिस्ट बनानी है विच कंटेन्स द सेम एलिमेंट बट अ लॉट ऑफ टाइम्स. अ मैनुअल वे वुड बी टू, आई कैन टाइप इट आउट, मैं सारे एलिमेंट्स को एक एक करके टाइप करूं, बट दैट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, राइट. इसके लिए आपको पाइथन में थोड़ा इजी वे दिया जाता है जहां पर आप सिर्फ एक एस्टेरिस्क साइन और मल्टीप्लिकेशन साइन डाल के द नंबर ऑफ टाइम्स you want it to repeat. अगर आप ऐसे लिखोगे, you will get a list which should look like this. If you see यहाँ पर जो एक एलिमेंट है, that is being converted into 4 elements. These are the index numbers again. So remembering that index numbers always start from 0 is very important because in some questions आपको index से related calculations करनी पड़ेंगी even for your practical file. So you need to remember the forward indexing as well as the backward indexing. Alright, let's look at another thing which you can do with list, that is slicing. Now slicing, as the name suggests, अगर आपके पास कोई भी fruit है, before you eat you might cut it, right, so that you can divide into 2 parts, maybe 3 parts or 4. Similarly in Python the slicing is used to create partitions. These partitions can be of n numbers. Let's look at a few examples. Before we start the question, let's just write the index first. यहाँ पर मैंने सारे इंडेक्स लिख दिए. नाउ व्हाट आई ट्राइंग टू प्रिंट इज लिस्ट फ्रॉम 0 till 3. So let me tell you how this function works. Always remember, ये जो आप स्टार्ट का इंडेक्स वैल्यू देते हो ये ऑलवेज प्रिंट होगा या फिर ऑलवेज कवर होगा, बट ये जो लास्ट का और मे बी द एंड पार्ट जो आप दोगे, it will not be covered. For example, if I'm trying to print from 0 to 3, the output you should get would look like this. अगर आप यहाँ पर देखोगे, the third index is not covered. It will only cover till n-1. और in other words, जो भी आपको end करना है like this, अगर आपको second पे end करना है तो आपको जो input है वहाँ पर +1 करके देना पड़ेगा. Looking at another example, जहाँ पर मैं start कर रहा हूँ 3 से, but मैंने end position नहीं दी है. In such cases, it starts from 3 and goes till the last value.
सो अगर यहाँ पर इसके आगे और भी ज़्यादा एलिमेंट्स होते, सो इट वुड हैव गॉन टिल द लास्ट. द आउटपुट फॉर दिस वुड लुक लाइक दिस. So I hope you understand how list slicing works. मैं यहाँ पर कुछ और भी दे सकता हूँ, something like this. List starts from 2 to 4. Now the things which would be printed will look like this. Second element would be printed and the third as well. There is another case जहाँ पर मुझे पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट करनी है. So it is kind of unnecessary, but let's just see how this works. यहाँ पर मैंने start element भी नहीं दिया, मैंने end element भी नहीं दिया. So which means the entire list will be printed as it is. ये पूरा का पूरा print हो जाएगा. So this was about slicing. कैसे आप elements add कर सकते हो वो हम अभी देखेंगे. Append method is used to add elements to a list. For example, हम लोगों ने पहले देखा, we have a list like this. What if I want to add another element to it? For those cases, हम लोगों के पास एक method आता है called append. ये हम लोग use ऐसे करते हैं. First of all, you will use the variable name. जो भी आपका variable name है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं dot. And finally we write append. Append actually means that we are joining something, and inside the append we want to input the element which we actually want to append. Okay, so this is an example जहाँ पर आपके पास already एक list है 1, 2. I want to add 3 to it so that the list becomes 1, 2, 3. So for that purpose, let's see what the outputs look like. यहाँ पर तो before appending anything, the output will be 1, 2, which is the list itself. After we append element 3, it should look like. You can also try out other elements. ज़रूरी नहीं है आपको same data type लिखना है. If the next thing which I write is list.append A, the output for this would be 1, 2. 3 already हम लोगों ने यहाँ पर join कर दिया था. That is the reason 3 is coming. And finally, we also append another element, which is A. So your final list becomes this. So sometimes हम लोगों को सिर्फ एक element add नहीं करना होता है. We want to add more elements. So for that specific purpose, there is another function called extend. We won't cover that much about extend because more important function is append. You use it everywhere in your Python programs. Next is, how can you add an element to a list or maybe update an element to a list? Let's say I already have a list like this, but I want to change this into 3 or maybe some other element. For that specific purpose, we use the index of the list and we allot a new value to it. अगर आपको याद होगा, हम लोग variables को ऐसे assign करते हैं, right? This means the value of A is 10. I can again change the value of A to -10 by just writing the next statement like this. I can again change the value of A to something like 3.14. So each time this statement is executed, हम लोग A का जो value है वो update कर सकते हैं. On similar lines, अगर मुझे list के किसी भी element को update करना है, I need to know the index of that element. For example, I want to update this element to a new element. So for that, we would write list at 1, and I can change it to anything else like IP. Your final list would look like English IP 1997 and 2000. Similarly, you can also change the second element or element at position 2 to maths. There is another way to change multiple elements in one go. So this actually means कि list का element 2 से लेके 3 तक change होने वाला है. So it becomes
CS and 2022. Basically, these two will go away and this will be joined here. So this is how you can update elements in a list. There is another way जहाँ पर आप elements add नहीं delete कर रहे हो. For that specific purpose हम लोग delete method use करते हैं. Let's say I want to delete 2 from this list. The outputs for this program when executed would be like this. मैंने यहाँ पर delete किया list element at 1. This does not mean कि मैं 1 delete कर रहा हूँ. It means इसका index जहाँ पर 1 है, which is 0, 1, 2, this part will be deleted. So after you execute this, you are left with 1, 3. So जब भी हम लोग square brackets use करते हैं, इसके अंदर हमारा हमेशा index value आता है and not the element itself. So these are a few basic operations which you can find out or maybe practice at your own homes. सबसे पहले हम लोगों ने लेंथ नहीं देखा था, बट इट इज ऑल्सो वेरी कॉमन एक्सप्रेशन विच इज यूज्ड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अ लिस्ट. आपकी जो लिस्ट है इट कैन बी वेरी लॉन्ग, सो यू कैन नॉट जस्ट काउंट सिंगल एलिमेंट्स देयर. पाइथन प्रोवाइड्स यू द फंक्शन लेंथ जहाँ पर आपको डायरेक्टली उसकी लेंथ मिल जाती है. इन ऑर्डर टू जॉइन टू लिस्ट्स वी जस्ट यूज द एडिशन साइन. अगर मुझे एक एलिमेंट को बार बार रिपीट करके लिस्ट बनानी है, I just use asterisk sign and multiply with the number of times you want the element. This is a membership function जहाँ पर हम लोग सिर्फ चेक कर रहे हैं if 3 is present in this value. So it is present at the second index, so which means it will give out true. And this is iteration, which gives you an output like this. So I hope you understood each and everything in today's session. There are other important functions as well in Python language which cannot be covered in this entire video, but these are the lists of the same. What I want you to do is try and test it out at your own homes. अगर आपको उसमें difficulty आ रही है, you can post your comments under this video. So let me just cover a couple of those. हम लोगों ने already append देख लिया, हम लोगों ने delete देखा है. There are a couple of other things as well. पॉप का मतलब होता है हम लोग एलिमेंट को पॉप कर रहे हैं उसकी पोजीशन से. इट इज सिमिलर टू डिलीट इन सम टर्म्स. लिस्ट डॉट इंडेक्स से आपको किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स मिल सकता है. लेट्स से आई हैव अ लिस्ट लाइक दिस एंड आई वांट टू फाइंड आउट कि ये जो 3 एलिमेंट है इसका इंडेक्स क्या है. सो वी कैन यूज दिस फंक्शन ओवर देयर. वी सॉ द len फंक्शन. If I want to get the maximum value inside a list, I can use the max function. अगर मुझे minimum चाहिए, I can use the minimum function. Rest of them you can just cover at your home, and if you have any queries, you can let me know in the chat box. Alright, so if you found this video useful, you can just press the like button. If you have not subscribed to the channel already, I'll be posting more videos on CS, IP and AI. So please do not forget to press the subscribe button. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye-bye.